The immune system, there are some definitions I have written here for you, like the immune system, like the immunity and the immunization or vaccination. Here is the first one, immune system. Just you have earlier also known, and in the topic, the tissue, in the animal tissue, you have learnt about the, once again I may request you to, again you may learn that portion specifically which related with this defense system of our body, that is the immune system of our body. That means there are different types of WBCs. Here our body has an elaborate defense system known as immune system. This immune system, when there is an entry, just I have told you, when there is an entry of the foreign bodies or the microbes in our body, then there will be antigens, and in against that antigen there will be production of antibodies that will defend us. And immunity is the ability of an organism to recognize, destroy, eliminate or resist the attack of an organism. It can make a person free of a specific infection throughout his life. That is the immunity. And how can we may increase our immunity? By taking good quality of nutritious food, and by which if our immune system will be a stronger one, there will be no attack of pathogens, as because in our body there is a special arrangement with the help of the different types of WBCs, white blood corpuscles or the white blood cells are present that can defend to us from the different types of microbes. And this is the immunization. If there is some problem that even after the immune system when failed, what will happen? Like in case of the COVID-19, you have seen that there is a large number of earlier, before this dreaded disease, there is some more diseases which can were once a time known as the epidemic, and there is no treatment at all. But after the discovery of the vaccination, now it is possible to treat and to prevent from that type of diseases. आपने देखा होगा, अभी आपने डॉक्टर जेनर का जो आप बुक में आप अपना देखेंगे स्टोरी, उसे पढ़ेंगे। चूँकि आज काफ़ी समय मैंने ले लिया आपका, इसलिए अब इसको और फर्दर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे डॉट सेशन में आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। तो immunization or vaccination, vaccines can be defined as dead or weakened microbes. ये देखिए यहाँ पे जो डिस्कवरी का जो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि काऊ को जो पॉक्स हो गया था, उसको जो चेचक हुआ था, उससे उसमें जो चीज़ें थीं उसको जब दूसरे बॉडी से टच कराया गया, रब कराया गया, उसको पहले में बताया गया कि ये चाइना और भारत की ये इतिहास रहा है, बरसों से बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वो इस तरह का ट्रीटमेंट किया करते थे। तो जब काऊ डॉक्टर जेनर ने जब उस इन्फेक्टेड पार्ट से जो निकले हुए मटेरियल थे, उससे जब किसी हेल्दी पार्ट को जब ट्रीट किया गया तो उसे फिर एक माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद फिर उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसी से आपका वैक्सीनेशन का डिस्कवरी हुआ। तो वैक्सीन्स कैन बी डिफाइंड एज डेड और वीकेंड माइक्रोब्स विच आर नॉट एबल टू कॉज द डिजीज बट स्टिमुलेट। देखिए माइक्रोब है, लेकिन किस तरह से वो स्टिमुलेट कर रहा है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। इस तरह से दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन। तो हियर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, एंड देयर वेरियस पार्ट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम then may you ask, you are free to ask from this particular chapter any questions in your dot session class. Thank you very much.